2023 is towards its end and the year has been quite a handful with all the new car launches. Kia Seltos, Maruti Jimny, Maruti Fronx, Hyundai Extra, Hyundai Verna, new Tata Nexon, new Tata Harrier, new Tata Safari and the MG Hector facelift. Yes, the list is endless. लेकिन कुछ features हैं जो काफी ज़्यादा popular और common रहे हैं in all the cars that were launched in 2023. So what are all those features? We are going to have a look at all of them in this video. So stay tuned till the end क्योंकि काफी features हैं जो आपको impress करने वाले हैं. I'm Shubham Parashar. You're watching Park Plus, your car app. Do subscribe to the channel. Do hit the bell icon to stay notified and do head to the app for all the updates in the Indian car bazaar. चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस साल के सबसे popular features कौन से हैं. You see this camera right here? इसका मतलब ये गाड़ी level 2 ADAS features, autonomous driving assistance system के साथ equipped है और इसकी radar sensor यहाँ बम्पर पे integrate की गई हुई है. So features like forward collision avoidance, forward collision warning, rear cross traffic alert, lane keep assist and adaptive cruise control, fatigue alert, ये सारी features काफी common है with all the cars introduced in 2023. Let's have a look at the list. Be it a compact SUV like the Kia Seltos or Honda Elevate, mid-size SUV like the Tata Harrier or MG Hector, or mid-size sedan like the Hyundai Verna or Honda City, all new models introduced in 2023 with prices starting upward of 10 lakh rupees were equipped with these ADAS features in the top-end trim. और तो और हाल ही में Hyundai ने Venue सब कॉम्पैक्ट SUV में और Kia ने आने वाली Sonet facelift में भी कुछ ADAS features इंटीग्रेट किए हैं. You see these turn indicators going sideways. पहले हमने luxury cars like Audi में देख रखा था. Now these are quite common in compact SUVs like the Seltos and the Hector because normal turn indicators are quite passé. Yes, sequential turn indicators have their own charm and add to the premium quotient of any car. Not only OEMs but aftermarket में भी ये feature काफी demand में है. You see this curved screen setup, quite fancy and quite nice to look at, and this integrates the 10.25-inch touchscreen. अब touchscreen आजकल सारे sizes और shapes में available है. 10 inch, 10.25 inch, 14 inch. In fact, इतनी बड़ी भी tall और vertical touchscreen आज के टाइम पे available है. लेकिन एक feature जो काफी common रहे हैं वो है wireless Apple Carplay and Android Auto, वो भी full size view के साथ. Now आप देख सकते हैं I am not using any wire to connect my phone here and pretty seamless this looks. लेकिन ये feature बस compact SUV या फिर mid size SUV या फिर higher end cars में ही limited नहीं है. You get it right from the subcompact SUV and the hatchback segment. Yes, the latest SmartPlay Pro Plus in the Maruti Suzuki has this feature right from the Baleno and Fronx to the Grand Vitara. And you see it in majority of the compact SUVs and mid-size sedans like the Volkswagen Tiguan and Virtus or Skoda Kushaq or Slavia. However, surprisingly the Koreans are not offering it yet, neither in the Verna or Creta या फिर Seltos or Carens. Sunroof kholo. Opening the sunroof. You saw that? And see that again. Hello MG. I'm here. Navigate to India Gate. I find more than one India Gate. Which one would you like to pick? First one. Okay, getting directions to India Gate. Open the driver's side window. Opening the driver's window. So English and English voice commands have become quite common in cars that are offered with connected tech और ये mid-size sedans में compact SUVs में right from these segments have become quite common these days. The MG Hector made connected tech and voice command very famous in India and now we see these features in quite a few mass market cars like the Kia Seltos, Hyundai Creta, Kia Sonet, Hyundai Venue or even the Hyundai Verna and so on. Ventilated seats, one of my personal favorite features, especially when you're out there in the scorching summer heat. In fact, ये features आजकल hatchbacks में तो देखने के लिए नहीं मिलते, but compact SUVs और sedans में ये काफी common हो चुके हैं. Well, I would love to see this feature democratizing even further to even hatchbacks, the most useful of all newly introduced features. It's already on offer on the Kia Sonet. Power driver seat, ये वो फीचर है जो आजकल हम सब कॉम्पैक्ट SUVs से ही देखने लगते हैं. We saw this in the Venue, in the Sonet, and car makers like Volkswagen and Skoda who were not offering it till date have updated their range with this feature. The Hyundai Venue also has it and the upcoming Kia Sonet facelift will get it too. And no need to mention that it's already there in all compact SUVs and sedans. In fact, Volkswagen Tiguan and Virtus, Skoda Kushaq and Slavia जिसमें ये पहले नहीं मिलते थे, have been now updated with this feature as well. Sunroof, चाहे पैनोरामिक सनरूफ हो, सिंगल पेन छोटा सनरूफ हो या फिर लग्जरी कार्स में ग्लास रूफ हो, बट सनरूफ हैव गॉट क्वाइट द फैंसी दीज डेज और अभी आपको 10 लाख की नीचे की गाड़ियों से ही मिलने स्टार्ट हो जाते हैं लाइक द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, Hyundai Exter और द i20 जो हैचबैक और माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में आते हैं.
सनरूफ की क्रेज इंडिया में बढ़ती ही जा रही है. Small cars like the Hyundai Extra and Maruti Suzuki Fronx have it now, and it's one of the major deciding factors while buying a new car. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बिकॉज एनालॉग डायल्स काफ़ी ओल्ड फैशन अब हो चुके हैं और एक डिजिटल स्क्रीन में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ऑन अ सिंगल स्क्रीन राइट हियर. सो ADAS के डिटेल्स, TPMS डिटेल्स एंड इनफैक्ट ऑल द फ्यूल इकोनॉमी फिगर्स यू हैव just in one common screen. Well, I still love those classic old analog dials, but honestly, it's very easy for car makers to add more information and features on digital instrument clusters, and guess what? It costs lesser than the analog ones. 360 डिग्री कैमरा व्यू, यहाँ पर स्क्रीन पे आपके पास गाड़ी की पूरी सराउंडिंग की फुटेज अवेलेबल है बिकॉज कैमरास आर माउंटेड इन द फ्रंट ऑफ द कार एट द रियर एंड इन द ORVM. सो यार काफ़ी हेल्प आपको मिलता है जब आप गाड़ी पार्क कर रहे होते हो. एंड इनफैक्ट यू हैव साइड व्यू मॉनिटर इन सम कार, सो एज सून एज यू टर्न द इंडिकेटर ऑन, यहाँ पर आपको साइड की व्यू मिल जाती है. क्वाइट हैंडी व्हाइल यू आर चेंजिंग लेन्स एंड व्हेन यू आर पार्किंग द कार. 360-degree camera view has become quite a common feature in 2023. It's offered right from hatchbacks like the Maruti Suzuki Baleno to higher segment compact SUVs and sedans. Head-up display which you get even in the hatchbacks these days, quite handy because when you're driving you don't need to take your eyes off the road. Just like 360-degree camera, head-up display अब आपको hatchback से ही मिलने लगते हैं. Baleno, Fronx, Brezza, Grand Vitara, Seltos or be it higher segment cars, the feature is becoming popular. ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर विच कम्स क्वाइट हैंडी स्पेशली इन द नाइट जब पीछे से गाड़ी हाई बीम पे ऑपरेट कर रही होती है और ये फीचर आज के टाइम पे हमें हैचबैक्स में भी मिल जाते हैं. Be it the Baleno, i20, Sonnet, Fronx or bigger compact SUVs, auto dimming mirror are quite common. वायरलेस चार्जिंग, ये फीचर इतना कॉमन हो चुका है कि जिन गाड़ियों में आपको ये फीचर स्टैंडर्ड नहीं मिलता वहां पर यू कैन ऑप्ट देम एज एन एक्सेसरी एंड इट अगेन कम्स क्वाइट हैंडी बिकॉज यू डोंट हैव टू फिडल विद द वायर. टाइप C चार्जिंग पोर्ट के लिए, USB चार्जिंग पोर्ट के लिए, इनफैक्ट यू कैन जस्ट कीप योर फोन ऑन द ट्रे एंड इट विल बी चार्ज्ड ऑन द गो. Entry-level hatchbacks like Espresso, Wagner, Exter or Swift have wireless charger as an accessory option, while it's now on offer on the top-end trims of all compact SUVs and sedans. पैडल शिफ्टर्स गॉन आर द डेज जब सिर्फ लग्जरी या फिर परफॉर्मेंस कार में पैडल शिफ्टर देखने के लिए मिलते थे. इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे ऑटोमेटिक के साथ आजकल पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं बिकॉज इंजन्स हैव बिकम क्वाइट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंड क्वाइट एडवांस्ड. इनफैक्ट सरप्राइज हम तब हुए थे जब एक्स्ट्रा में AMT गियरबॉक्स के साथ भी पैडल शिफ्टर्स ऑफर की गई थी. Paddle shifters offer a good sense of control over gear shifts and has a sporty feel to it as well. Exactly why they have become so popular in automatic cars. चाहे Brezza हो, Grand Vitara, Taycan हो या Extra AMT ही क्यों ना हो. Ambient lighting, be it a proper ambient lighting system that you see on the Hector or on the Seltos with proper lights on the dashboard, on the footwell, on the door pockets, या फिर just a single strip on the dashboard like we see in the Taycan. But ambient lights are quite common right from the compact SUV segment, and yes, it really works well to jazz up the vibe of the cabin and uplifting your mood. Well, again, this is one feature Indian जनता loves. जिनकी गाड़ी में ambient light नहीं मिलता, they resort to aftermarket to jazz up the cabin of their car. Premium sound system with a center channel and subwoofer, be it a Bose sound system, Infinity, Alchemist or JBL. Right from the compact SUV segment and mid-size sedan segment, even you get to see these features these days. Well, Tata Motors started this trend back in 2015 when they introduced JBL speakers in the Tiago, and it has evolved and how. Now, premium sound system is offered right from premium hatchback and subcompact SUVs like the i20, Sonnet and Venue to compact SUVs like the Seltos and Creta to sedans like the Verna. ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, अब ये फीचर बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है. यू हैव दैट इन द सेल्टॉस या फिर 3-row SUVs लाइक इन्विक्टो में भी आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम देखने के लिए मिल जाते हैं. Well, this feature is not a must-have but adds to the convenience when you are accompanied by other passengers and they prefer different climate settings. In fact, chauffeur-driven MPV owners के लिए ये काफ़ी useful है because the rear takes more time to cool और तब तक ड्राइवर की आगे कुल्फी जम चुकी होती है. Electric parking brake, a feature that was offered in higher-end cars, now have become quite common even in compact SUVs and mid-size sedans. Well, ये फीचर भी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है. Koreans were first to introduce it in mass market segment cars and now we see it even in Maruti and Tata, Mahindra and Toyota SUVs. ड्राइव मोड्स लाइक इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट, अब ड्राइव मोड्स जो है वो गाड़ी के इंजन बिहेवियर को और गियर बॉक्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं टू गिव यू ईदर बेटर फ्यूल इकोनॉमी और मोर परफॉर्मेंस, एंड दीज आर बीइंग ऑफर्ड इन इवन हैचबैक्स दीस डेज. Again, Tata Motors made drive modes very popular with the Zest and Tiago, and now you get it right from the subcompact SUV segment.
6 airbags. Remember the days when we were fighting to offer dual airbags as standard safety features in all the cars? अब सरकार ने 2 airbags तो mandatory कर दिए हैं, but quite a few car makers have become aware and they are offering 6 airbags as standard across all their models and variants, even in their entry-level cars. Hyundai and Kia are the first few car makers to offer 6 airbags as standard, and other car makers are likely to follow suit quite soon. With the increase in pollution level and dropping air quality index, car makers को इतना समझ में आ चुका है कि गाड़ी के अंदर की जो वातावरण है उसको साफ रखना बहुत ज़रूरी है, and that's why majority of them are offering air purifiers as standard in almost all their cars. And what I quite like कि इनको काफ़ी अच्छे से integrate किया गया है either in the armrest or in the dashboard. और जिन मॉडल्स में आपको एयर प्यूरिफायर स्टैंडर्ड नहीं मिलता, वहाँ पे यू कैन बाई देम एज जेन्युइन एक्सेसरी फ्रॉम द रेस्पेक्टिव कार ब्रांड, बट दे डोंट लुक एज नीट एंड ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस. Power tailgate that opens just with the click of a button. Now this feature is quite common from the mid-size SUV segment. Compact SUVs में भी ये नहीं मिलता, but right from the Hector you get in most of the cars these days. Not a feature that is restricted just to luxury cars anymore. Last but not the least, sunblinds for rear windows. Now this feature is quite common in Korean cars like Seltos, Sonnet or Creta, और recently Tata ने भी इसको update किया है in the Nexon, Harrier and Safari, and this is one feature I really like and I really hope that this becomes even more common in cars going forward. Well, those aftermarket sunblinds look very tacky hanging on your car windows. I love the way these sunblinds are integrated in the doors when not in use. These are not being offered in quite a few cars, not even in entry-level luxury cars, and I hope that changes soon. After all, it's one of the easiest features to integrate. So out of these, what are your favorite features, और वो कौन से features हैं जो आप commonly देखना चाहेंगे in the cars offered in the Indian Car Bazaar? Let us know in the comments below and keep following Park Plus, your car app, for all the updates in the Indian Car Bazaar. I am Shubham Parashar and I'll see you in the next video. Ciao.